Hello, beta. Good afternoon once again. The recording is on now. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay, so first of all, shall we continue with our star identification first? Let's complete that. Yes, Okay. sir. Okay. Let me set up the presentation. So this was the last what we did, beta. We made the rational horizon diagram. We made the PZX triangle in it. And then from the information what was given in the question, we identified the three items which were known to us. One is side PZ, it is the colat. We know our DR latitude, so the colat is obtained. Then the side ZX, it is the true zenith distance. We know the altitude of the body, so true zenith distance can be found. And third is this angle Z, which is the azimuth. We have the azimuth of the body 285, so we can find out this angle Z. So with these three now we are able to apply the cosine formula and we are able to calculate the required parts of the triangle. So let's see how the cosine formula is applied and how we obtain the missing parts. We have the question now mentioned on the top left corner so that you can correlate the working easily at any time. Now, as we have seen in the PZX triangle, we have two sides known to us and the included angle. So let's apply the cosine formula now on the PZX triangle. We are going to apply the cosine formula for angle Z. So cosine formula applied on angle Z is cos of angle Z is equal to cos of opposite side, which is px. So that gives us cos of px minus cos of adjacent side 1, that is pz, multiplied by cos of adjacent side 2, that is zx, whole divided by sine of adjacent side 1, which is pz, multiplied by sine of adjacent side 2, which is zx. So you can see the cosine formula has been applied. And if you look carefully in this formula, all the items marked in green are known to us. You can see angle Z on the left hand side is the quadrantal azimuth, which is known to us. Then PZ is the colat known to us. ZX is the true zenith distance known to us. At the denominator, again, PZ and ZX, both these values are known to us. The only unknown in this triangle is the side PX, Papa X-ray, which is the polar distance. And once we put the known values, we are able to easily calculate the polar distance of the body, or PX side of the PZX triangle. So this is the part which we are looking for, represented by a question mark in the diagram. So once we put all these known values, this part is obtained. And as soon as the polar distance is obtained, now we know polar distance is 90 minus declination. So as soon as you obtain the polar distance of the body, 90 minus polar distance is going to give you the declination of the star.
So you can see very easily here with a single application of the cosine formula, we have obtained the declination of the star. The declination, which is represented by dx in the diagram, is obtained. That's exactly the concept when we are using the rational horizon diagram or the PZX triangle. Whatever information is available to us is plotted, put in the diagram, and this information gives us a lead into what formula is required to be used in that particular situation. And once you use the formula, it could be either the cosine formula or the Napier rule, the unknown parts are obtained. So that's what we have done. And we have obtained the declination of the star. Now we have the third side of the triangle also known to us, Papa X-ray. The polar distance is available to us for any further calculations. Let's now apply the cosine formula again and find out other part of this triangle. So this time we are going to apply the cosine formula and we are going to find out angle P of the PZX triangle. Angle P, we are aware, is the LHA of the celestial body, the local R angle of the celestial body. As you can see in the diagram, PZQS represents the celestial meridian of the observer, and you can see PXD represents the celestial meridian of the heavenly body or the star. So angle between the celestial meridian of the observer and the celestial meridian of the body measured westwards. You can see the angle is being measured in a westerly direction. The left side of our diagram represents the westerly direction. The right side represents the easterly direction. So angle at the pole contained between celestial meridian of the observer and the celestial meridian of the body measured westwards is the LHA. And this is what we are going to find out now. So we apply the cosine formula again, and this time the cosine formula is applied for angle P. So let's apply the cosine formula. Cosine formula says cos of angle P is equal to cos of opposite side, which in this case is ZX, minus cos of adjacent side 1, which is PZ, multiplied by cos of adjacent side 2, which is Px, whole divided by sine of adjacent side 1, which is Pz, into sine of adjacent side 2, which is Px. The cosine formula is applied for angle P. And if you look carefully in the cosine formula, you will see that all the data items on the right hand side are known to us. The first thing is Zx, which is the true zenith distance. It is known to us. Second is side PZ, which is the colat, known to us. Third is Px, or the polar distance, which we just now calculated in our previous step. This is known to us. In the denominator, Pz and Px, both these parts known to us. So with all the parts on the right hand side known to us, which are basically all the sides of the spherical triangle, once you put these parts in the calculator, it gives you your angle P. So this is what we have found out now with the second application of the cosine formula. Now this angle P, as we just now discussed, is the LHA of the star. So let's label it as LHA. So LHA of the star is now known to us. Now proceeding further, let's go back to our question.
So you can see in the question, we have the date as well as the time available to us. Now with this date and time, we can easily find out or identify what is the LHA of Aries on this particular day at this particular time. We can easily obtain the LHA of Aries. So in the next step, I'm going to find out the LHA of Aries using the date and time from the almanac. The GHA of Aries is given to us for every single day, hour, minute, and second of the year. Once you apply your longitude to GHA Aries, you will get the LHA Aries. So once LHA Aries is calculated, we can now obtain the SHA of the star. SHA is sidereal R angle. How do we obtain the SHA of the star? Now, SHA of the star is given by the relationship LHA star minus LHA Aries. So we have the LHA star known to us. We have just calculated this angle P, which gives us the LHA of the star. And we have obtained the LHA Aries from the almanac. Now with both these known to us, LHA star and LHA Aries, their difference gives us the SHA of the star. So this is the second item which we have obtained. The first item which we found was the declination of the star. The second thing which we obtained was the SHA of the star. Now from the SHA and declination which we have obtained, now we can easily identify the star from the star's information table given in the almanac. The star information table is given at page number 268. And in this table, all the visible star, all the possible stars which can be used for sight taking are listed. And they are listed in increasing order of their SHA. So starting from 000 SHA going up to 360 degrees SHA, you have the complete list of all the possible stars which can be used for sight taking. So since we have the SHA of the star known to us, it will be very easy for us to pinpoint the required star. So you just enter into that table, look for the SHA which you have obtained in the question, and with that SHA you will be able to identify which is the star whose observation you have taken, and the star is identified. Now at this point of time, it may look to you that what was the purpose or use of calculating the declination of the star then? Now declination is also required because number one, in the PZX triangle, you will not be able to find out the LHA without finding out the polar distance and the declination of the star. So we need to find the missing side of the triangle before we can find any other angle. And number two, when you enter into the stars table given in the almanac, now this stars table gives us the SHA and declination of the stars. The SHA and declination which we have obtained is basis the DR position given to us, the dead reckoning position given to us. Now since it is a DR position, it can have errors in it. The DR position can have errors. It is not a fix, it is not an observed position. It is a dead reckoning position, and there is a possibility of having some errors. Now whatever errors are there in the DR position, since we have used our DR latitude and DR longitude in our calculation, that tells us that the LHA or the SHA and declination of the star which we have calculated
may also have some errors. So the SHA value which you are looking for in page 268 star information table may not exactly match with the SHA given in the table. It may be close. So the reason for that is the inaccuracy of the DR position, which may result into the inaccuracy of the SHA and declination of the star, which is calculated basis the DR position. So SHA which you have calculated may not exactly match with the SHA given in the table. So you will have to look for the nearest SHA which is there in the table. Now, when you look for the nearest SHA, it is possible that you may have two stars whose SHA may be very close to the figure which you have calculated. It is possible your value may be falling between two other SHA values. Now, in that case, the only way to identify that out of these two, which is our required star, is where the declination comes to use. So if you have a doubt about the name of the star in the stars table list, your SHA is close to two particular stars SHA. So you just go to the declination part and you check the declination of both the stars. You will see that the declination which you have calculated will match with the declination of only one star. And that is the star which we are looking for. So a combination of SHA and declination gives us a sure shot identification of the star which we have used for our site. So this is the complete process of star identification using the rational horizon diagram or the almanac information. Beta, let me know any doubts at any stage. No, sir. All clear, beta? Yes, sir. Okay, all right. Great. Then you have understood the application of the rational horizon diagram and the PZX triangle. That's a very critical topic understood. So let's close the presentation then. Okay. Now, beta, after you have understood this topic, you can go into your practical navigation book. And in that practical navigation book, there's a chapter on star identification. If you want, you can practice a couple of questions. So you should be able to do these questions now. Only thing is you need to be familiar with altitude correction because you need to correct your altitude. So if you are comfortable with altitude correction, you can go ahead and do these questions. Otherwise, just wait for a couple of sessions. I will cover up the almanac with you, and I'm going to cover up the altitude correction topic also with you. So it will get refreshed in the mind, and then later on you can attempt them. So that was one ये thing. पेपर में सर लॉन्ग बैकग्राउंड के क्वेश्चंस भी आते हैं क्या? लॉन्ग बैकग्राउंड मेरिडियन पैसेज इसके आते हैं सर? यस बेटा, इनके क्वेश्चंस आते हैं और अगला टॉपिक जो है हमारा इज गोइंग टू बी साइट सॉल्विंग. ओके सर, ठीक है, थैंक यू. ओके सर, ये जो एसएचए हमको देखना है बुक में, उसमें बेटा, वो मंथ वाइज दिया है, वो मंथ वाइज में देखना होगा ना? you are talking of the table on page 268, right? यस सर. Right. बेटा, जिस भी मंथ में आपने साइट ली है, the date which is given in the question, you have to look for it in that particular month. ठीक है सर. सर, इसमें कितना डिफरेंस आता है? लगभग 10-15 मिनट का आता है क्या? Possible 10-15 minute difference can be there. It is possible. सर एक चीज पूछ रहा था मैं. बोलो हाँ बेटा. सर, जैसे
एक क्वेश्चन कर रहा था मैं, उसके अंदर जो जीएमटी लिया था उन्होंने, जैसे डिफरेंस करते हैं ना क्रॉन टाइम से, एक सुबह का ले लो या शाम का ले लो, स्टार के लिए सुबह के 6 बज रहे थे, बुक का एग्जाम्पल था, तो स्टार तो सुबह 6 बजे भी दिख सकता है, मतलब मैंने देखा है इवन जहाज पे, और शाम को 1800 आवर्स पे भी दिख सकता है, तो अपन 1800 क्यों चूज कर रहे हैं, वो क्यों चूज नहीं कर रहे जीएमटी में? Okay, so that is called as chronometer ambiguity. या दैट्स, मैं कर रहा था तो मेरे को मतलब ये मेरे को लगा कि मतलब स्टार 6 बजे भी दिखता है सुबह, ऐसा नहीं है नहीं दिखता, मून भी दिखता है 6 बजे, तो वो जैसे उस समय नहीं लेके अपन शाम को ही क्यों ले रहे हैं टाइम को? Okay, बेटा I'll cover up this chronometer ambiguity in the next class. हाँ, मैं आपके साथ almanac भी cover करने वाला हूँ, and we will pick up this chronometer ambiguity also. I'll tell you there how it is resolved. Okay, बेटा? कोई रीजन, मतलब कोई पर्टिकुलर कुछ तो होगा जिसकी वजह से अपन डिसाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा बता सको तो बता दो सर। Certainly बेटा होगा, वहाँ पे इन्होंने आपको AM PM इंडिकेशन जरूर दी होगी, whether it is हाँ। AM on ship और PM on ship, right? पीएम ऑन चिप दे रखा है। Right. So जो दो GMT के ऑप्शन आ रहे हैं, हाँ उन दोनों ऑप्शन में LIT लगा के LMT निकाल लो। हाँ, वो मैंने पूरा चेक कर लिया था, उससे मैंने वो देख लिया, बस ये पूछना चाह रहा था कि ये एम्बिग्यूटी सिर्फ एएम पीएम से चेक करेंगे? हाँ बेटा, इसी से चेक करेंगे, ठीक है सर, ठीक है। इसी से चेक करेंगे। This AM PM is given specifically for the ambiguity only. ओके सर, ओके। Okay. Don't worry, I'll cover this up in the next class. I'll pick up the almanac, then I'll explain you in the presentation also how it is done. Okay. और बताओ बेटा, और डाउट? Okay. Okay. अब बेटा number one, somebody asked me about the DR position, right? So बेटा तुमने जो दो स्क्रीनशॉट भेजे हैं, एक बुक वाला है और एक हमारा जो वीडियो है उसका है, so दोनों में सेम डेफिनेशन तो है DR की. So what is the doubt which you are having? सर उस पे लीवे कंसीडर नहीं किया ना सर? That's right. The leeway is not considered in the DR position. तो सर हम जो इफेक्टिव कोर्स लगाएंगे उस पे तो लीवे रहेगा ना सर? उसमें लीवे रहेगा बेटा. तो फिर सर हम करंट, फिर वो दोनों पोजीशंस डिफरेंट आएंगी, फिर करंट कहाँ से, वो उसका डाउट था सर। Okay. I'll tell you बेटा. See बेटा, as far as the definition of DR position is concerned, the definition says if you apply your course steered and the engine distance to the initial position, to the starting position, then whichever position you reach will be your DR. इसमें ना तो हमने करंट को कंसिडर किया है, ना ही विंड को कंसिडर किया है. पवन बेटा, यू कैन म्यूट योर माइक. ओके. अब जब हम चार्ट पे प्लॉटिंग करते हैं तो बेटा चार्ट पे जो प्लॉटिंग करेंगे उसमें हमें जो एज पर द डेफिनेशन DR पोजीशन है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. We don't want to put the course steered and the engine distance steamed. We don't require in it chart plotting. जब भी हम कभी भी प्लॉटिंग करेंगे तो प्लॉटिंग में हम इफेक्टिव कोर्स को ही प्लॉट करेंगे, बिकॉज अगर हमने बिना विंड के इफेक्ट को कंसिडर किए प्लॉटिंग कर दी तो हमारा प्लॉट बनेगा नहीं सही, गलत हो जाएगा. सो प्लॉटिंग में वी विल हैव टू कंसिडर द इफेक्ट ऑफ द विंड and then plot our course. Means CTS cannot be plotted. The DR position cannot be plotted on chart plotting straight away if wind is there. हमें जो position chart पे plot करनी होती है, it is having the effect of wind in it already. DR position में तो ना wind है ना current है, पर जो position हम chart पे plot कर रहे हैं, that is after considering the effect of the wind. So you can say it's a intermediate position between the DR and the fix. That is what we plot in our course distance and current vector triangle. We don't plot the DR position here. Okay.
ठीक है सर, वो सर वही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी ना डेफिनेशन के हिसाब से, तो डाउट हो रहा था सर। राइट बेटा, राइट. सो इज इट क्लियर नाउ? हाँ क्लियर सर। ओके बेटा, ऑल राइट. ओके, सो और बेटा एनी मोर डाउट्स? Okay, great. So up beta, having completed this PZX triangle, we have done a topic also, star identification based on the rational horizon diagram. The next thing what we are going to start off with is the side solving methods. So ये method आपने second mates में भी किए हैं. They were done touched in pre-C also. The same methods need to be done again in phase 1. So Marpas, long bicron, intercept, x meridian, Polaris, ये सारे के सारे मेथड हम एक बार दोबारा से टच करने वाले हैं. We will be revising them all. So next session I am going to start off with you with the basics of almanac. We will just quickly refresh the almanac, and we will refresh the altitude correction, the computation of azimuth and amplitude, and then we will move on to Marpas, or latitude by meridian altitude, and the other methods. That's going to be the plan from tomorrow's class, or whatever day I have the next class with you. So ये हमारा plan है आगे. And for today basically this was the only topic which was left, so that we have covered. So any doubt or query in your mind now? सर एक चीज़ और पूछनी थी, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा मेरे शिप का, उसमें क्रोनोमीटर जो टाइम चलता है वो जैसे जब 12 से 6 तक नॉर्मल चलता है या स्लो रहता है, पर एकदम से 6 के बाद फास्ट हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? मैं आपको वीडियो भेज दूंगा कि पर्टिकुलर उस एरिया में जैसे 6 से 45 के जो बीच में, 6 से 9 के बीच में होता है तो वो बहुत स्लो चलना चालू होता है, और उसके बाद फिर जो ऊपर 12 से 6 तक आता है जब बहुत फास्ट आता है वापस. ठीक है, मुझे भेजना बेटा वीडियो, लेट मी सी. हाँ सर मैं भेजता हूँ, मैं देख रहा था, मैं भेजता हूँ. Okay, all right. चेंज करने के लिए क्या क्या कह रहे हैं? सॉरी, ना कंपनी को बोला नहीं चेंज करने के लिए. अरे खुद ने ही चेंज किया, पर वो दोनों केसेस में नया का नया भी वैसा ही था. भेजता हूँ, देखो वीडियो. कंपनी पैसा नहीं खर्च करती है, बोलते डीजीबीएस से निकाल दो यार. ओके सर अभी मेट्स के अंदर जो हमारे पीजेड ट्रायंगल के अंदर पहले हाई लैटिट्यूड्स के सन आते, मतलब वो आते थे क्वेश्चन जिसमें सन मतलब होराइजन से नीचे नहीं जाता था, वो अभी मेट्स में भी आएगा क्या, फेस 1 में भी? सर्कमपोलर बॉडीज है जी जी अभी भी right, फेस 1 में, फेस 2 में है सर वो? let us do the side solving ones. तो circumpolar body भी आएगा, it is there. In fact, these are the two things which remain now with us. One is the side solving methods. Side solving के बाद है हमारी plotting, और plotting के बाद हैं हमारे rational horizon based other questions. So circumpolar bodies की जो बात तुम कर रहे हो, that is also a rational horizon based question. So these are the three topics which remain now in navigation: side solving, plotting, rational horizon question, and that completes the navigation syllabus for us. Okay. सर वो मेरा मॉड्यूलर कोर्स का क्वेश्चन था, वो ये पूछ रहा था, जैसे हमने 18 मंथ्स के किए हुए हैं तो अभी हम प्रैक्टिकल करने के बाद 5 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं उसको? Yes, beta, you can. Once you do the practical, it will be automatically extended to 5 years. तो सर अभी कर लें, मतलब अभी कोर्स के बीच में कोई इशू होगा, जैसे एक दिन यहाँ से छुट्टी लेके करें तो? दोनों कोर्स कैंसिल हो जाएंगे बेटा. अच्छा ठीक है सर. फिर So once you complete one course, after that take admission into the other. सर फिर वो एक दिन के लिए है, 5-5 दिन के कोर्सेज है, कुछ ऐसा था? 1 day course बेटा, रिफ्रेशर्स की बात कर रहे हो? जी जी सर. It's a 1 day course. तो एक दिन जाके कॉल करके आ जाए, 5 साल के लिए रिन्यू हो जाएगा बस वो? बिल्कुल. ओके सर. बट अभी मैंने शेप में बात की सर, वो तो बोल रहे हैं कि एक कोर्स 5 दिन के लिए रिफ्रेशर AFF एंड PSCRB.
बेटा AFF रिफ्रेशर और PSCRB रिफ्रेशर की बात कर रहे हो ना आप? जी जी सर। इट इज़ a 1 day कोर्स ओनली। फिर हमें ऑनलाइन क्लास भी करनी पड़ेगी उसके लिए? ऑनलाइन तो आप कर चुके हो ना बेटा, आपके पास पार्ट ए सर्टिफिकेट है ना 18 मंथ्स का? जी। So online you have already done. Now only the practical remains. So online will not be repeated. ओके। एंड फिर वैसे एक दिन के जाने के लिए और फिर भी रिन्यू हो जाएगा 5 इयर्स के लिए? हाँ बेटा, तीसरी बार पूछो। सर क्योंकि ना आज मैंने फोन किया शेप में, उन्होंने मेरे को 5 दिन के लिए बताया, तो मेरे से मैं जब भी पूछा मैं कैप्टन सर से ही पूछूंगा क्या कह रही है, तो समझ नहीं आया। वो भी मैं बताता हूँ 5 दिन के लिए क्यों बताया। देयर वॉज ए मिसकम्युनिकेशन, दे मस्ट हैव अंडरस्टूड इट एज फुल AFF और फुल PSCRB, दैट इज फॉर 5 days. ओके सर। Okay, refreshers are only for 1 day. The full courses PSCRB and AFF are 5-day courses. एंड सर जैसे कि अभी हमने श्री राम से किए हैं, और हम किसी और इंस्टीट्यूट से जाके भी कर सकते हैं 1 डे ट्रेनिंग, या उसी इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा? बिल्कुल बेटा, कहीं से भी कर सकते हो आप। यू कैन डू इट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, दे आर बोथ सेपरेट। सर शेप में PSCRB भी है क्या? सब कुछ है बेटा, बिल्कुल है। सर मेडिकेयर का स्टार्ट हुआ पार्ट बी, मेडिकेयर मेन कोर्स पार्ट बी? बिल्कुल जी, मेडिकेयर पार्ट भी चल रहा है। ठीक है सर, मेरे को करना है। ओके सर हॉस्टल भी चालू है? सर वो कितने दिन का है? हॉस्टल नहीं है मेडिकेयर? बेटा। से अगेन? सर मेडिकेयर का कितने दिन का है पार्ट बी, द मेन कोर्स मेडिकेयर, नॉट रिफ्रेश? 1 day बेटा, मेडिकेयर पार्ट बी। और ओ यू आर टॉकिंग ऑफ द फुल मेडिकेयर पार्ट बी, राइट? हाँ जी सर, हाँ जी, फुल। नहीं बेटा, वो स्टार्ट नहीं हुआ है। द रीजन बीइंग उसमें हॉस्पिटल विजिट आती है, विच इज स्टिल नॉट अलाउड। ठीक है सर, ओके। तो मेडिकेयर फुल पार्ट बी के लिए तो हमें कॉल आया था सर ARI से। तो सर सीट वगैरह मिल जाती है क्या यहाँ पे शेप में? हाँ बिल्कुल मिल जाती है बेटा। इस टाइम पे सीट जो है सिर्फ एक ही कोर्स है ऐसा जिसमें सीटों की जो रिस्ट्रिक्शन है, दैट इज। सर एक्चुअली मेरे 3-4 कोर्स एक्सपायर हो रहे हैं, तो वो सभी रिफ्रेशर हैं। आई वाज थिंकिंग कि ये वाले कॉलेज के एग्जाम खत्म होने के बाद वो कर लेता हूँ, देन आफ्टर दैट आई विल गो फॉर द एग्जाम्स। बेटा कभी भी कर सकते हो, पर एग्जाम खत्म होने के बाद नहीं, जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद करने हैं। जी सर, यही जो अभी फंक्शन फेस 1 के जो चल रहे हैं, फेस 1 के एग्जाम होंगे कॉलेज में, उसके बाद कर सकते हैं ना सर? एग्जाम्स तो पहले भी खत्म हो सकते हैं, ये कोर्स जो है ये 13 तारीख को खत्म होगा, उसके बाद करने हैं बेटा। ओके, अंडरस्टैंड सर। सर अभी ARI में फोन किया तो वो दिल्ली से नहीं करा रहे, खाली पंचकुला ही आना पड़ेगा? किसके लिए बेटा? सर रिफ्रेशर AFF एंड रिफ्रेशर PSCRB का जो 1 डे का मेरा पेंडिंग है। बेटा ARI दिल्ली में वी डोंट हैव ए मॉकअप एंड द पूल in Panchkula, shape Panchkula, the pool and the fire mock-up is there. So that is why ये जो refresher courses हैं ये पंचकुला में ही हो रहे हैं। दिल्ली में हमारे पास प्रैक्टिकल्स के लिए मॉकअप और पूल नहीं है बेटा। ओके सर ये GMDSS GOC रिन्यूअल ग्रीन वाली बुकलेट के लिए भी कोई कोर्स वगैरह करना पड़ता है क्या? I don't think बेटा, you only need experience. सर ये GSC की उसकी बात कर रहा है जो हम सेकंड मेट के ऊपर वो एग्जाम देने जाते थे, GSC की बुक आती थी एंडोर्समेंट की, नहीं वो एक्सपायर होगी 10 साल के अंदर है ना, तभी है। Right, there is no refresher for GMDSS beta. If you have the, I think you require 6 months of C time in last 5 years. That is the last which I remember. आप इसे चेक कर सकते हो। WPC वेबसाइट है एक। You go on the WPC website, you will find out what is the requirement. I think it is 6 months of sailing. Where you have completed or done your GMDSS duties in last 5 years. सर फेज 2 के लिए रैंक स्कोर मेडिकल कंपलसरी है? नो बेटा, फेज 2 कोर्स अटेंड करने के लिए कंपलसरी नहीं है। फेज 2 रिटर्न्स के लिए भी कंपलसरी नहीं है। फेज 2 ओरल्स के लिए कंपलसरी है। ओके सर।
ओके, और बेटा खत्म हो गया डाउट्स? सर ओके, ठीक है बेटा, डन। अब मुझे बस एक थोड़ा सा रियलिटी चेक करना है आप लोगों के साथ। रियलिटी चेक इज नंबर 1, यू टेल मी, आप इतने सारे टीचर्स के टच में आते हो, लॉट ऑफ ऑनलाइन क्लास एक्सपीरियंस यू हैव, हाउ वुड यू रेट द क्वालिटी ऑफ माय माइक एंड वॉइस? इज इट ओके, सर यू आर एवरेज, परफेक्ट, बैड? गुड सर, सबसे सही आपका ही है सर। यू आर परफेक्ट सर। बेस्ट, लाउड एंड क्लियर। ओके, ऑल गोल्ड राइट, मेडल सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। गुड थिंग इज आपके जब आप पढ़ाते हो तो योर मीन चेहरे पे ऑलवेज स्माइल रहता है, दिस इज पॉजिटिविटी, अपने आप अट्रैक्ट करते हैं हमें, मतलब फोकस रहता है पॉजिटिविटी, इट्स वेरी ग्रेट थिंग्स। चाटना चालू होते सारे। चलो नहीं सर, बढ़िया आपको बेटा, आपको thank you. डाउट पूछते हैं ना सर, आपके फेस पे कुछ ऐसे एक्सप्रेशन नहीं होते, लाइक गुस्सा आ गया हो कि बार बार रिपीटेटिवली पूछ रहा है, तंग कर रहा है बार सर बार, सबसे ऐसा अच्छी नहीं चीज ये है कि आप साथ में लेके चल रहे हो, मतलब पूछने पे ये नहीं करते अच्छा बेटा, मतलब ऐसे कुछ नहीं बोलते कि 10 क्वेश्चन वापस पूछ लो तो पूछने की इच्छा ही खत्म हो जाए। ओके, ऑल राइट, ऑल अच्छा सर, ठीक है सर, से ही पढ़ाया सर। राइट, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो द वॉइस क्वालिटी इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। अब दूसरी चीज़ बेटा मुझे ये बताओ, द presentations which I show you, the PPTs which I show you, the material which you have, अब आपने ये navigation second mates में भी पढ़ी है, you have done that in Prezi also. So how do you find these presentations or the material which I show you? सर अव्वल नंबर सर नो करेक्शन, ऑल ओके। अच्छे है सर, अच्छे। नहीं सर, बहुत अच्छा है। Okay, very good बेटा, thanks for the सर आपका positive प्रेजेंटेशन feedback. बाद में भी देख के सब समझा जा सकता है, ऐसा है सर, कभी भी Oh. देख के समझा जा सकता है, ऐसा है। So you keep these videos with you and you watch them again, the class videos? सर नहीं सर, वैसे तो आपके प्रेजेंटेशन से लिख लेते हैं ना, तो इन केस मतलब कुछ हो जाए तो वी कैन, जैसे कभी कभी कुछ डाउट रह गया या कुछ क्लास में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो फिर से देखते हैं तो समझ आ जाता है। इवन दो सर वो वीडियोस भी आप जो दिखाते हो वो भी मतलब बीच में कभी डाउट हो जाए तो फिर वही लगा के भी देख सकते हैं ना, तो उसमें भी अच्छा है सर। सर आपके उसका सिस्टम अच्छा है, अच्छा रिफ्रेश हो जाता है, वी कैन इवन फास्ट फॉरवर्ड करके उसे जल्दी कंप्लीट भी कर सकते हैं जो आप क्लास का सेशन। आपकी प्रेजेंटेशन के बाद डाउट रहना बहुत रेयर होता है, मींस वेरी वेरी लेस पॉसिबिलिटी, जरूरत नहीं पड़ती सर वीडियो रखने की। डाउट आती ही चला जाता सर। ओके बेटा, ऑल राइट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब मुझे लास्ट चीज बताओ कि द स्पीड विद विच वी कवर द टॉपिक्स, इज दैट स्पीड ओके और इज इट स्लो और इज इट फास्ट, कैसी है? ओके सर, ओके। सर स्पीड का उतना नहीं है, बस समझ में आना चाहिए, समझ में आता तो और स्पीड इज ओके, सारा सही है। राइट, ऐसा तो नहीं लगता कभी कभी कि बहुत स्लो हो गया है, या ऐसा तो नहीं लगता कि ये तो सब ऊपर से ही निकल गया है? नहीं सर, स्लो वैसे तो तो कभी कभी नहीं नहीं निकलता, लेकिन कभी-कभी लगता है कि स्लो है मतलब। सर पर आप कभी-कभार जो मतलब आपकी फ्लो भी बात नहीं लगता है आता। तो उससे ये लगता है कि हमारे लिए फायदा ये, हमें थोड़ा टाइम और मिल जाता है किसी और मतलब सब चीजों को करने का जो होता है वो। Okay, so slightly slow, but it is advantageous for us. यस सर। यस सर। यस सर। सर जैसे कि जो चीज हमें आती है उसके बारे में अगर पढ़ते हैं तो लगता है स्लो, जो हमें नहीं आती उसके बारे में लगता है कि या परफेक्ट, तो हम दूसरे पॉइंट ऑफ से तो किसी और को भी नहीं आ सकते, तो इट्स ओके। Right. Great beta, great. So thank you for the feedback. I usually keep taking the feedback after certain interval so that it gives me a lead into whether we are going in the right direction, and if there is any amendment required there, so I amend it. That is the whole purpose of taking this feedback from you. सर आप फीडबैक सिर्फ अपने बारे में लेंगे सर या बाकी सारे कोर्स के बारे में भी? बेटा अभी बाकी का भी ले लो। see I try to self improve myself, so ये फीडबैक तो मैं अपने लिए ही ले रहा हूँ on a personal level. बाकी कोर्स एंड के टाइम पे आपको एक फीडबैक फॉर्म भेजूंगा, so there you will have the feedback for others also. Right now I am not interested in others feedback for the time being. सर उस फीडबैक में तो वेरी गुड ही लिखना है ना सर।
Okay. Okay. So great, beta. This was for the purpose of self-improvement. I keep doing this exercise after some time so that I know that I'm going on the right track. So that was all for this particular session. So let's meet in the next class now. So see you. Bye-bye for now. Okay, sir. Thank you. Okay, Thanks, beta. Kevin. Thank you. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye bye.